I now call upon Shri Anand Sharma. मैं अपने दल की तरफ से राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने विचार और धन्यवाद ज्ञापन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर देने का। इस सदन में, दूसरे सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। पिछले कल नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों ने अपनी बात रखी। मेरे दल के वरिष्ठ साथियों ने, नेताओं ने, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी बात सदन में रखी। ये एक परंपरा है सदन की मर्यादा को रखने की, अपनी बात को कहने की, दूसरे की बात सुनने की। ये प्रजातंत्र की बुनियादी जरूरत है। इसको हर एक को समझना, स्वीकार करना और सम्मान करना आवश्यक है। तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। और जो भारत की जनता की, चाहे कोई चुनाव जीत कर आए हैं या हम इस तरफ बैठे हैं, लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं जो ज्वलंत समस्याएं हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं, उस पर उनके सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। कल इस सदन में कहा गया, अभिभाषण प्रस्ताव में है कि एक मैंडेट मिला है, जनमत मिला है, स्थिरता का मिला है, एक मजबूत सरकार का मिला है। हमने उस मैंडेट को, उस जनमत को विनम्रता से स्वीकार किया है। नेता सदन ने ठीक कहा कि सत्ता परिवर्तन होती है, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, शांतिपूर्वक तरीके से होता है। आप वहां से यहां आए थे, हम यहां से वहां चले गए, 10 बरस के बाद हम यहां आ गए। ये परंपरा बनी रहेगी और ये टूटनी भी नहीं चाहिए। यही भारतीय प्रजातंत्र की आप एक शक्ति है और यही एक सोच है देश की। मुझे आपको एक चीज कहनी कि जहां हमने इसको स्वीकार कर लिया है, पर एक चीज मुझे कहना है कि हमें जो कहा गया कि कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, हमको बड़ी शालीनता से, गरिमा से इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। The very fact that we are being told that we should not be bitter in defeat and we should accept it with grace. I was rather surprised. Shri Arun Jaitley ji is a very respected and learned member of this house and a friend. I would like to remind, these two words were somehow deleted from the memory in 2004, when the courtesy and the special privilege of the Prime Minister to introduce his Council of Ministers was denied to Dr. Manmohan Singh ji, the Prime Minister. It was in this house. It was in this house that we were not allowed, and even to present the budget or to have a discussion on the budget. I can assure you, we know how to be graceful in defeat. We know how to engage in constructive engagement. We know how to uphold the dignity of Parliament. We have also suffered, both the houses and the nation is witness, when the houses did not function, when no business was transacted. This is not to say that I am suggesting कि जो परिपाटी आपने बनाई उस पर हम चलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कल स्पष्ट कर दिया था कि हम सत्ता में रहे हैं, ये परिपक्वता है हमारे प्रजातंत्र की, जो आपने सही कहा, मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए जहां देश हित की बात होगी, जहां आपकी कोई नीति हिंदुस्तान को मजबूत करने की होगी, हिंदुस्तान के विकास की होगी, आम आदमी के विकास की होगी,
हिंदुस्तान को मजबूती लाएगी, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को सुरक्षित रखेगी, आपको हमारा रचनात्मक सहयोग मिलेगा। कल कई बातें हुई, अभिभाषण में है, मैं अपने आप को उन्हीं तक सीमित रखूंगा, समय का ध्यान रखते हुए। The leader of the house said something which to my mind was unfair. He said that in what state they had handed over the country and its economy to Dr. Manmohan Singh ji and the UPA government in 2008 to 2004. That the growth, GDP growth was 8.5%. That's a fact on record, we don't deny. And that we have left what in legacy? We have left a shattered economy. We have left a country where the GDP has nosedived, where the investment cycle has been destroyed. Investment climate has been vitiated. I was rather surprised. Let me put the record straight. Chairman sir, when the NDA left office and UPA formed the government, there were global tailwinds. The global economy was doing extremely well. The first 4 years of this century, Sri Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister and the NDA government benefited from the global tailwinds. Were we able to sustain? We did sustain for the next 4 years. Please give us that credit. And in 2008, the world saw the worst economic crisis, which followed the financial crisis. Anybody having some knowledge of economics knows that if an economic crisis is preceded by a financial crisis, that is more severe and difficult to overcome. The entire tenure of UPA 2 was in the global headwinds, no tailwind. From 2008 until now, the global economy has not lifted itself out of the crisis. The capital inflows were very weak. There's contraction in global trade. But let me now tell you, and for the matter of record, for the benefit of the members and through the media, which always plays an important role, as my learned friends on the other side know, because we have seen a kind of a campaign which the world has taken note of. Congratulations. High decibel, high voltage, high technology. और मैं तो बधाई दिल से दे रहा हूं कि आपने वो करके दिखाया, प्रधानमंत्री जी के टेक्नोलॉजी का कैसे सदुपयोग होता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं कि आप एक ही जगह पे देश के 600 जगह पे आपका भाषण जनता सुने, उसमें कोई आपत्ति नहीं, प्रजातंत्र है, आपकी ये सोच है, आपने दिखाया। पर ये प्रचंड प्रचार तंत्र हमने देखा, इसलिए मैं मीडिया को कहता हूं कि जरा भाई हमारी भी बात को गौर से सुनो, ये बैलेंस बने रहना चाहिए। भारत की जीडीपी 2004 में 590 बिलियन डॉलर थी। हमने क्या छोड़ा है? 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की जीडीपी, जब 5 साल आर्थिक संकट है, गहरा संकट। आप कहते हैं एवरेज ग्रोथ की बात मत करें, क्यों ना करें एवरेज की? आपकी एवरेज 5.9 थी। आप केवल अपने अच्छे दिन देखेंगे और दुनिया के संकट के दिन नहीं देखेंगे। हमारी एवरेज 7.6% है। देश की पर कैपिटा इनकम, माननीय नेता सदन ने कहा कि वी हैव एलिवेटेड पॉवर्टी। मैं बताता हूं, पर कैपिटा इनकम 24,000 रुपए थी हिंदुस्तान की, पर कैपिटा इनकम 69,000 रुपए हुई है, 3 गुना बढ़ी है। मैं सारे विषयों पे नहीं कहता। भारत के फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व
110 अरब डॉलर था। हम 312 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़कर गए हैं, जबकि हमको पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट होती है देश में, अगर आप उसको देखें, जो हमको खर्चा करना पड़ता है जब आप सत्ता में थे, उसकी तुलना में 5 गुना ज्यादा तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, पेट्रोल की, डीजल की, हमको 180 अरब डॉलर पेट्रोलियम इंपोर्ट्स का खर्चा करना पड़ा। पर ये हमने आप छोड़ के गए हैं। मुझे आपको शायद यह भी बताना आवश्यक होगा कि आपने जो बात करी इकोनॉमी की, exports, investments. Let me again inform this august House, Chairman Sir, through you, that when NDA left office and the learned leader of opposition was my predecessor, the same ministry where I had the privilege and honor to serve this country for 5 years, India's exports stood at 63 billion US dollars. When we left, and mind you, there was 7 to 12% contraction of global trade following the crisis. It was 313 billion US dollars Indian exports. Since this question was put to us that we have left the country in tatters and a shattered economy, this is not being generous. This is not being fair. It appears to me, and rightly it has been said, when it comes to the address of the president, his packaging of all the slogans, perhaps the mindset has not changed that the elections are over. People have voted. You have won. We have come this side. We have accepted it. And we respect. And we have congratulated you repeatedly. But now, please stop this election campaign. Now, let's get to serious business. When it comes to investment climate, Shri Arun Jaitley ji, let me tell you, India has received, since the year 2000, 327 billion US dollars of FDI, of which 19.83 billion dollars of FDI came in NDA government 2000 to 2004. The rest, more than 303 billion, has come during UPA 1 and UPA 2. And during this UPA 2, the period of crisis, the FDI which has come into India is 205 billion US dollars. But this cannot be denied. It's not that we have not handed back something, and we were not a responsible government, and we were not a focused government, and we were not serious and sincere about serving our country. It is expected of every government, prime ministers and ministers, to be true to their responsibilities, which we tried to do. It's a different matter that we had a vitiated narrative. We had an environment which made functioning difficult. I do not wish that misfortune to the new government, to the Prime Minister and his team, that the same climate, the same narrative should confront you. We are responsible, both as members, as opposition, as citizens of this great Republic of India. We will do everything which is in the interest of democracy and in the interest of this country. Sir, on the elevation of poverty, I must congratulate our leader, the UPA chairperson, Srimati Sonia Gandhi, and the Prime Minister, the then Prime Minister, my Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, for giving to us policies where citizens' rights and entitlements were recognized and respected, where democracy was empowered. And if you look at the steps that we took, the social security net was strengthened. When it comes to spending on health, it multiplied 6 times. On education, 8 times. So
So let us not be told that we are going to see a नया युग, एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत. ये भारत हमेशा श्रेष्ठ रहा है प्रधानमंत्री जी. ये भारत निकृष्ट कभी नहीं रहा. चुनाव में आपने कह दिया, लोगों ने सुन लिया. ये भारत सदियों से रहा है, प्राचीन संस्कृति है, महान देश है, हमको नाज है अपने देश में. आज नहीं बनेगा. जहां तक गरीबी की बात है, जो हमने योजनाएं बनाई, 13 करोड़ हिंदुस्तान के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए. ये सच्चाई है या नहीं? कोई इससे इनकार कर सकता है इस देश में? आप भले हमारी आलोचना करें, विरोध करें, आपका अधिकार है, पर सत्य को नहीं नकार सकते. ये सत्य जनता के पास भी जाएगा. इतिहास हमेशा सत्य लिखता है, चाहे हमारा सच्चाई या आपकी सच्चाई. आपके अभी शुरू के दिन हैं, ये कुछ अरसे के बाद बात होगी. अभी तो इस पे हम कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं होगा. हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपकी सोच है आप उसको पूरा जरूर करें, पर आपने जो दिखाया है उसमें नवीन क्या है? सामान्य है. देयर इज नथिंग न्यू. देयर इज जनरलाइजेशन एंड ऑल्सो यूज ऑफ वर्ड्स. हमको कोई आपत्ति नहीं, आपकी सोच है. इफ द विजन इज ऑफ 5 T's, मैंने बड़े गौर से सुना था जब पहली बार कहा गया, ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. Now in English language, if you have to spell these words, T will be used in all 5. Nothing new. India is an old civilization, so traditions have been there. 3 S and 3 Ds. If we have to use the word democracy, demography, and development, D will be used in English language for all 3. If we have to talk of skills, scale and speed, Derek Bryan is nodding because he knows language better than me. S3 S's will be required. So good luck. Vision is good. I hope the country benefits. But let us be clear. Let's not be carried away that this country has not seen either talent or technology. ये देश तो चांद पर पहुंच गया, मंगल पर जा रहा है, परमाणु शक्ति है. ये देश की मिसाइल्स दुनिया के हर हिस्से में जाती हैं. क्या इसे आज से पहले मैं सम्मान से कहना चाहूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों की, इस देश के लोगों की, जिन्हों की अचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया हिंदुस्तान के लिए, दुनिया को दिखाया, उनको स्वीकार करें सम्मान के साथ. आपने कहा है कि आप चाहेंगे ये कंसेंसस बने, आम सहमति बने. अच्छी बात. आम सहमति होनी चाहिए, रजामंदी, रायशुमारी होनी चाहिए. हमने भी प्रयास किया. हो सकता है नेता सदन ने जो कहा कहीं कमी रह गई हो. मैं स्वीकार करने को तैयार हूं. कहीं कोई कमी पेशी हो, आपको शिकायत रही हो, पर अगर आप आम सहमति से चलाना चाहते हैं देश को, रायशुमारी से चलाना चाहते हैं, सदन के सब लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो उसका स्वागत करेंगे, उसका विरोध नहीं हम करेंगे. माननीय सभापति महोदय, ये कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया, मेरे अन्य साथियों ने, कि काफी चीजें वही हैं, अधिकांश वही हैं जो हो रही थी. कोई नई बात नहीं है. But let me be specific about manufacturing. Let me be specific about industrial corridors. Let me be specific about the freight corridors. जब ये बनता है अभिभाषण, अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि सारी बात सरकार को समक्ष रखें कि देश में ये बड़े काम हो रहे हैं, और सरकार उसको स्वीकार करती. हमको, देश को भी अच्छा लगता. मैं आप बताता हूं. This country adopted the National Manufacturing Policy on 25th of October 2011. The cabinet approved it.
It is under implementation. It proposes to raise the share of manufacturing in GDP by 10 percentage points in a decade. The principal instrument are the national investment and manufacturing zones, which will be standalone integrated industrial cities of the future, manufacturing cities. Is it on paper? The answer is no. We are doing it in partnership with the states. 16 of these cities called the NIMS have been notified. 4 have been launched. Single window clearance mechanism has been effectively put in place. Japan is a major partner, developmental partner in the development of the industrial corridors. जिन शहरों का मैंने जिक्र किया जो बनने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि जापान का योगदान, जापान के साथ जो हमने सहमति बनाई, जो करेंसी स्वैप की, वो प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इनकी सूझबूझ का, इनके दर्शन का। इंटरेस्ट स्वैप का अरेंजमेंट किया, पहले $15 बिलियन आया, पिछले साल 50 बिलियन उसको बढ़ा के कर दिया गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक is the most innovative infrastructure project ever conceived and the largest presently under implementation in the world. जिन शहरों का मैंने जिक्र किया, जो 16 नोटिफाइड हैं, उसमें से 6 राज्यों में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में 3 बड़े हैं, एक लॉन्च कर दिया गया शेंद्रे बिदकिन, एक पोर्ट सिटी बन रही है दिग्गी पोर्ट सिटी, एक तुमकुर उमरे तालुका के पास बन रहा है, नागपुर के पास। ये सबसे छोटा 50 स्क्वायर किलोमीटर का है शहर, सबसे बड़ा 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। ये हम नहीं कहते कि हम ही कर रहे हैं, जापान साथी बन के आए, पैसा लाए, टेक्नोलॉजी लाए, और राज्य की सरकारें उसमें भागीदार हैं। राज्य की सरकारों को हम साथ लेके चले हैं। It is being done in a partnership with the states, not otherwise. Now, with regard to the other corridors, let me inform this August House, sir. The Amritsar-Kolkata Industrial Corridor was approved by the Cabinet on 20th of January 2014. The Chennai-Bengaluru Industrial Corridor has been extended first to Tumkur and now to Chitradurga. The third is the spine. The fourth, the Bengaluru-Mumbai Economic Corridor, in which UK has come as a partner country. Now it's my responsibility and duty to put all this before the House and before the country, so that this impression which has been created as if we were doing nothing, we were just going to the office and going back home, that's not true. Now, with regard to the e-governance, good luck. But let me also inform, the e-governance national mission mode projects were launched in 2006. 27 mission mode projects are under implementation. We have e-enabled most of the institutions. For business climate, for approvals and registrations, Chairman sir, there is a national mission mode project called the e-biz project. All payments and applications are done electronically. Infosys has executed it. Bank realization certificates are done electronically. National Optical Network mission was approved by the Cabinet. It's under implementation on the same day as the National Manufacturing Policy on 25th of October 2011. So please, you continue with this work, but let this impression not be given that nothing was happening. We hope that we have worthy colleagues who are now in the government, the Finance Minister of India,
my successor. She may have come to Parliament now, but she's earnest and sincere, and she brings a lot of knowledge. I'm sure that you will continue with the work, and our best wishes to you. Sir, on FDI, this President's address has spoken about FDI. It's important for me to mention. We opened up most of the sectors, raised the sectoral caps. I will not go into details. There was reference made, a very vague reference on FDI in defense, the Sitaram Yechury ji raised yesterday. There's also talk about FDI in railways. FDI in railways, the cabinet notes were cleared. The matter was not listed because the model code of conduct came, and I'm sure that you will go ahead and do that. But there's the other issue. We did not vitiate the investment climate. My dear friends, you did it. You did it. I will tell you. I'm not yielding. Please. Sir. Sharma ji, you are exhausting your party time. No, well, I am the last Precisely speaker. 3 minutes. No, sir, I will need. Thank you. I will need a bit more. But I'll Please, try to. please cooperate and conclude. No, but not in 3 minutes. So what I'm trying to say, that the FDI multi-brand retail, which was brought in, first executive decision which was brought to Parliament for debate, for vote, both the houses voted in favor. There was ringing endorsement, even by the Supreme Court. All the farmers' unions in the country, all the consumers' unions in the country wanted it. I want to know, you are talking of managing agriculture production, technology. The President's address talks about that. We were bringing in technology. It was mandatory that 50% had to be there in the rural areas for infrastructure. Why this was opposed? There is organized retail in India. Big corporates are engaged in organized retail. If the farmers wanted it, if the consumers wanted it, if micro, small industry wanted it, you opposed it. Well, let's not. Well, okay. Derek, now we would like to know, because you want to invite investors, you want predictability and stability. I have urged, and I think it's my duty. I know that what are your views? That the stability and predictability of the policies is important. Chairman, sir, we never changed or reversed any policy decision of the NDA government. I would urge you to be cautious and careful. To be cautious and careful. I'm not talking of, this was not policy. I'm sorry. Retrospective is not policy, my dear young friend. Sir, there are two things which I have to mention before I conclude. Please. Please don't disrupt, please. Please. No. Please. Let the speaker conclude. Anand Sharma ji, please conclude now. Sir, I think respecting the occasion and the fact that we are the opposition, I do expect accommodation from the chair. That's why we had cut a large number of our speakers and reserved this time. And I hope that would be recognized. Party time. Sir, Prime Minister and his government have talked about repeal of archaic laws. Secretaries to the Government of India have been instructed, each department, to identify and repeal 10 laws. There are 80 departments in the Government of India, 76 secretaries. Is there a list? And please, the country would like to know which 760 laws are going to be repealed. It's a serious matter, very serious. Secondly, as capitalism has grown in any country, regulatory frameworks have evolved. As new technologies have come, regulatory frameworks have evolved. We have seen in electricity, we have seen in telecom, we have seen in the power sector.
So why not to recognize that there is also equally a real need of a regulatory framework to govern this country in a rule-based manner. Sir, considering the constraints of time, I want to flag quickly three things. President's address has talked of one rank, one pension, sir. I'm happy that you and we are on the same page. Leader of the House had said that it will be implemented. President's address says it's implemented. The then Defense Minister is here. The first order to implement one rank, one pension was issued on 26th February 2014. This is the notification. And the final order to ensure orderly implementation and the constitution of a working group headed by the Controller General of Defense Accounts as the chair, this was issued on 24th of April. So if this information was not made available to the new government, I'm just trying to be helpful in giving you this information and setting the record straight again. It's the last important thing which I have to say, but let me also tell, with all respect, that today we have a news a day. And this is important to hear, sir. Today I was reading, every day there is some instruction, and it is the right of the government, that every minister will now disclose their assets and liabilities. Please, let this country not get an impression that the ministers were not declaring their assets and liabilities now. Until last date is 31st of July, all of us without any exception, submitted it to our Prime Minister then. So this is not something new. Cabinet committee is being dissolved, EGMs dissolved. You have got a mandate. I do not know whether it is minimum governance. My colleagues have spoken. I won't take time on that. But these are disturbing signs of centralization, concentration of power. Lastly, I would like to talk about the world view, which is important. President's address has talked about it. माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण दिया, वो आए, अच्छी बात। आपने अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करने की बात कही, हम इससे सहमत हैं। But can I ask one thing? Your worldview is truncated. You cannot engage with a truncated globe. Why there is no mention of West Asia in your worldview? Why there is no mention of ASEAN, which is part of our Look East policy, and we are engaged in important negotiations, the RCEP negotiations? Why there is no mention even of Africa? Why there is no mention of Latin America? शायद आपका मनसा नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं इसको कि देखिए, इसको सोचें, कहीं ये इलाके दुनिया के जहां से हमारा बड़ी एंगेजमेंट है, इसका गलत मतलब ना निकालें। आखिर में मैं एक चीज कहूंगा माननीय सभापति महोदय, और आप भी उसको सुन के कहेंगे कि मेरे लिए अगर आप कुछ समय देंगे तो अच्छी बात होगी। मैं उसका कारण बताता हूं। आपने कहा 150 साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जब पूरे होंगे, उसको देश अच्छी तरह से मनाएगा। मनाना चाहिए। राष्ट्रपिता, उनका विचार, उनका दर्शन पूरी दुनिया सम्मान से मानती है। आप ये काम करने का आपने कहा है, पूरा सहयोग पूरे देश का रहेगा, नेक काम है, अच्छी तरह से करें। पर मेरा एक प्रश्न उठता है, जब आजादी का आंदोलन हुआ था, जो अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जवानी जेल में काटी, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसको दुनिया ने स्टेट्समैन माना, दुनिया ने इज्जत करी, जवाहरलाल नेहरू जी के 125 साल हो रहे हैं, आपने क्यों जिक्र नहीं किया? आपका विरोध हो सकता है, पर सरकार को देश की बात करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ी धरोहर देश के लिए छोड़ के गए हैं, उनकी कुर्बानी रही है, उनकी दुनिया में इज्जत है।
I'm therefore surprised that this is the world view. There's complete departure. And if this country does not recognize those who fought for the freedom, the tall leaders, the statesmen, a leader who was respected across continents, I would like you to reflect upon this and correct this. Thank you. मुझे आखिर में मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे यही कहना है, राष्ट्रपति अभिभाषण है, उसका पूरी चर्चा हो चुकी, ये परंपरा रही है, गरिमा रही है, उसका समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हैं हम, और आपसे भी कहते हैं, दोहरा रहा हूं, अगर आप सही माने में आम सहमति करके, सही माने में जीत में अहंकार नहीं विनम्रता दिखाते हुए सबको साथ लेकर चलेंगे, देश हित में सहयोग रहेगा। और जहां हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के हित को कहीं भी चोट पहुंचती है, चाहे संख्या जितनी भी हो, गलतफहमी ना रहे, विरोध होगा। आप भी दो रह गए थे, दो, और तब भी हमने वो दिन देखे, आपने भी देखे। तो प्रजातंत्र में ये होता है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो आपने कहा है, हम उसका सम्मान करते हुए, उम्मीद रखते हुए कि वैसे ही दिशा रहेगी, वैसे ही आप चलेंगे। धन्यवाद। Thank you very much.